Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Miss Sadia Iqbal from Garrison Academy Senior Campus, Gujranwala, Kent. I welcome you all to AppSex Online Support Program, and this is the third week in day one. So let us get started with our today's topic. Today we will be learning about inverse of a function, and then we will be talking about algebraic method to find inverse of a function with the help of different examples, right? And then we will be discussing basically question number 2 to find the inverses of given functions, right? So let us get started. Firstly, let me tell you what is inverse of a function. I know you people have learned about inverse of a function in your previous class in chapter number 13, where we had trigonometric functions. So we discussed inverse functions of those trigonometric functions, if you remember, sine inverse of theta, cos inverse of theta, tan inverse of theta, and etc., etc. But here we will be talking about finding inverse of algebraic functions, right? What is the basic definition of inverse of a function? The function, whatever is given to you, that should be both 1 1 and onto, from one set to the other, right? So what it should be? It should be both 1 1 and onto. Only then inverse of that function would be applicable or would exist. Okay, so what do we call 1 1 and onto function? A bijective function. So only in case of bijective function inverse function would exist. ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है जी? So what is the definition now? If f be 1 1 function from x onto y, the inverse function of f denoted by f inverse is a function from y onto x and is defined by this thing. And what is this thing? I'm going to explain it to you. Okay, I'll be needing actually some space, so that's why I'm coming here. Okay, so what do we say about a function? We say that, okay, if we have two sets who are having a bijective function f from x onto y. अब bijective function क्या होता है? जो 1 1 भी हो और onto भी हो, ठीक है? I'll be letting you know, थोड़ा सा याद करवाऊंगी. For example, if I have here a b and here I have 1 2. Let's say this a has this image 2 and this b has image 1. Now we can see that this function, this f, is both 1 1 and onto. थोड़ा सा मैं recall करवा देती हूँ. वैसे तो you people should know, but still, कौन सा होता है 1 1 फंक्शन, सर, जिसको इंजेक्टिव भी कहते हैं. 1 1 फंक्शन इज दिस. Let's say this f is a function. Suppose if I have like here 1 2 and if here I have 3 4, right, 2 elements, let's say, then this, if 1 is connected to this 3 and this 2 has also the same image as 3, now this is not a 1 1 function, right? But if we have a function like this from x to y, right? If we have, suppose, the same numbers 1 2 and 3 4, if this 1 is, let's say, connected to 4 and 2 is connected to 3, now this is 1 1 function, 1 1 function, ठीक है? अभी आपको एक और एग्जांपल भी देते हैं. Let's say if I have 2 elements here, 1 2, and here I have 3 4 and 5. Let's say now 1 has an image as 3, 2 has image as 5. Still this is 1 1, right? और ये फंक्शन भी है. फंक्शन के लिए क्या कंपल्सरी होता है कि जो आपकी डोमेन वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स लाजमी यूज़ हों. दिस y इज़ आर को डोमेन, हमें पता है, वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन वेरी डिटेल. ये जो को डोमेन है, ये सेट अगर पूरा का पूरा ना भी यूज़ हुआ हो, बट द इमेजेस, जो हमारे इमेजेस हैं, राइट, 3 and 5, ये अलग अलग चीज़ों के इमेजेस हैं. लाइक 3 इज़ इमेज ऑफ 1 and 5 इज़ इमेज ऑफ 2. देन वी विल से ओके दिस इज़ अ 1 1 फंक्शन, ठीक है? बट दिस इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन. वाई नॉट? ऑन टू के लिए व्हाट इज़ कंपल्सरी? कि जो आपकी को डोमेन हो, विच इज़ आर सेट वाई,
कोडोमेन और रेंज शुड बी इक्वल। बट यहाँ पे वी कैन सी, ये भी मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ दैट ओके, थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। दिस इज एफ, दिस इज एक्स एंड दिस इज लेट्स से वाई। ओके, सपोज 1 2 3 4 and 5, this one is connected to let's say this and this 2 is let's say connected to 5. Now we can see, हमें पता है domain would be x, पूरा का पूरा set x. What is my range here? My range is not 2 3 5, no, sorry 3 4 5, no, my range would be only the images which is 3 and 5, right? Plus थोड़ा सा मैं क्लियर लिख दूँ, 3 and 5, क्या चीज़ इमेज में नहीं है? This 4, so this would not be your range, but ये पूरा set 3 4 5, this is your codomain. ठीक है, सो व्हाट इज़ माय कोडोमेन? 3 4 5 या पूरा का पूरा सेट y. इन शॉर्ट ये दैट व्हेन योर रेंज वुड बी इक्वल टू योर कोडोमेन, तब हम उसको कहेंगे ऑन टू फंक्शन. ठीक है, और अगर वो इस तरह से होगा तो इट वुड बी 1 1, ऐसा ही है. और जब ये चीज़ हो 1 1 एंड ऑन टू बोथ, then we will say okay the inverse of function would exist. तो इसका आसान तरीका ये है, when the elements of set x, when the elements of the two sets would be equal, तभी आपका 1 1 and on to फंक्शन बनेगा, which is बाइजेक्टिव. ये अपने माइंड में रखिएगा, और उसी केस में सिर्फ आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, नाउ जो हमने कहा था फ्रॉम x ऑन टू y, उसका क्या मतलब था? लेट मी क्लियर दैट टू यू. दिस इज सेट x, दिस इज सेट y. Okay, let's say this is 1 2 and this is AB, right? Now A is let's say connected to B and 2 is let's say connected to A. How would we define this? Here domain of X क्या है? Sorry, domain of F. What is domain of F? It is my set X. And what is range? It is my set Y. Now when we will talk about our set, our inverse, and here I will be saying okay, define इसको कैसे करेंगे? F when applied on X we got Y. ऐसा ही है, let's say इसके elements हैं X की तरह, इसके elements हैं Y की तरह. ठीक है, now this is the definition of this F set. ठीक हो गया? When we will talk about the inverse, that would mean that inverse would go from opposite, मतलब पहले x से y पे जा रहा था, अब from y जाएगा कहाँ पे? Towards x. ठीक है, from y it would go towards x. ये यहाँ से यहाँ. Now you can see if it is going from this f inverse is going from y to x, it would mean now what would my domain? Domain तो set y बन गया. Domain of f inverse क्या हो जाएगा? आपका set y. और set y क्या था आपका? Range थी. Range किसकी थी? f की थी. Getting it? Similarly, f inverse के लिए this set x would become range. हालांकि this set x was my domain of f. So इससे हमें क्या पता चलता है? So there we discussed that okay, the domain of f would be range of f inverse, and range of f, like the function, would be domain of f inverse. यही हमने भी पीछे बड़ा डिटेल में डिस्कस किया. ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर्ड. एक और चीज़, एज वी से द फंक्शन f, लेट्स से इफ इट इज़ गोइंग फ्रॉम सेट x टू y, राइट, लेट्स से दिस इज स्मॉल x, दिस इज स्मॉल y. हम इसको कैसे डिफाइन करते होते हैं? f अप्लाइड ऑन x and it gave us this small y. Then how would we define our f inverse? We all know that f inverse, I should make it I think again. Okay, now I'll be letting you people know about f inverse. See, we all know that f goes from this x to y. F inverse would go from this y to x, and we can see that this f inverse would be applied on y, and we are getting as a result this x. Clear? So ये दो चीज़ें देखिए. Here you can see this is f of x which is equal to y, and here f inverse of y is equal to x.
इन शॉर्ट, वैसे अगर आसान वे में देखें, इफ़ आई टेक दिस f टू द अदर साइड, तो क्या बन जाएगा, x इधर ही रह गया और वो बन गया f इनवर्स ऑफ y। वही तो ये चीज़ है, ठीक है। सो दिस वॉज जस्ट अ हिंट। लेट अस गो टू द बेसिक डेफिनेशन नाउ। See, I was talking about this thing. If f be 1 onto function from, if f be 1 function from x onto y, the inverse function of f defined by denoted by f inverse is a function from y onto x and is defined by this, like x would be f inverse of y for all y belongs to y, like small y belongs to capital Y, like this, the set. If y is equal to f of x for all x belongs to x, अभी हमने डिस्कस किया। Okay, important, inverse of a function would exist only if the function is bijective, मतलब both 1 and onto, we have discussed this earlier. One more thing, we have discussed this as well, range f should be a subset of y and no repetition in range. दिस इज़ द मीनिंग, लाइक वो 1 इंजेक्टिव का बताया जा रहा है। एंड ऑन टू और सब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, रेंज ऑफ एफ शुड बी इक्वल्स टू सेट वाई। एंड व्हाट इज़ योर सेट वाई, सेट वाई इज़ आर को डोमेन सेट, आई हैव एक्सप्लेन दिस अर्लियर, ठीक है जी। नाउ okay, vertical line test and horizontal line test, I'll not be dragging it that much because we have discussed this in class first year, chapter number 13 mein you were told about the vertical line test and horizontal line test when you discussed the graphs, right, of trigonometric functions, but still slightly we can discuss it. Okay, let's say this is a straight line graph, right, this is your x-axis, this is your y-axis, then what is the meaning of this vertical line test? Okay, I'm going to let you know about that. Okay, if this is the graph, the straight line, this is my x-axis, this is my y-axis, then this we will be drawing a vertical line on this graph. ये जो ग्राफ वाली लाइन है इसमें मैं एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगी और मैं देखूंगी कि वो हमारे ग्राफ की लाइन को, लाइक इस पिंक लाइन को, कितने पॉइंट्स पे कट करती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन। ये लेट्स सी, ग्राफ की ये एक्सिस की बात नहीं हो रही, इस वर्टिकल लाइन, इस ग्राफ की लाइन की बात हो रही है। लेट अस सी दैट वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इट इज़ कटिंग दिस पिंक लाइन ऑन अ सिंगल पॉइंट, इट मीन्स ये जो ग्राफ है, ये जिस भी लाइन का है वो लाइन एक फंक्शन है, ठीक है। and if we have a function, we have the graph like this, let's say, okay, circle है, सर्कल, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही होगी ना जिसका ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो अगर अब मुझे कैसे पता चलेगा वुड दिस बी अ फंक्शन और नॉट, आई विल बी ड्राइंग अ वर्टिकल लाइन। सिमिलरली इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी होता है। मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ना यू कैन सी दिस वर्टिकल लाइन जो कि पिंक में है, दिस इज कटिंग माई ग्राफिकल लाइन एट 2 पॉइंट्स, इट मीन्स दैट दिस वुड नॉट बी अ फंक्शन। तो ये आपको MCQs वगैरह के लिए पता होना ज़रूरी है, ठीक है जी। बाकी दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग इनवर्स। okay, to check if the graph drawn is a function or not, that is if the vertical line passes through, ये मैं पढ़ रही हूँ, I'm reading this. Okay, the first definition, vertical line passes through the graph at a single point, then it is a function. Horizontal line test, to check if the inverse of the function exists or not. Through horizontal line test, if the horizontal line is passing through the graph at a single point, then inverse of the function would exist, otherwise it would not. Similarly, जैसे हमने vertical line draw की, उसी तरह हम horizontal line भी draw कर सकते हैं। अगर वो भी 2 से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा point पे touch करेगी उस line को, आपकी graphical line को, it would not carry a inverse. That's it, ठीक है जी। Let us talk about the questions now. We will be finding the, yes, ये मैं पहले explain करूँगी अलग से, then we will come to this slide, ठीक है। What is the first question? Find the real valued function f defined below, sorry, for the real valued function f defined below, find f inverse of x, then f इनवर्स ऑफ -1, यानी जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम x को -1 से रिप्लेस करेंगे, एंड देन वी विल वेरीफाई जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हमने पिछले लेक्चर में की थी, वी विल बी अप्लाइंग दैट कि ओके f ऑफ f इनवर्स ऑफ x would it be equal to f inverse of f of x, and would that overall be equal to x or not,
एंड इट वुड बी इक्वल, ठीक है, ये आपकी निशानी भी होगी। क्या क्या प्रूव करना है हमको कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वैसे कॉमन सेंस की बात है, दिस वुड बी इक्वल टू एक्स, लेकिन ये हमने प्रैक्टिकली प्रूव करना है बाय यूजिंग अ क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन भी हमने किया था। अब ब्रैकेट्स चेंज कर देंगे एंड व्हाट वुड दैट बी, सॉरी पोजीशन चेंज कर देंगे, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, वुड दिस बोथ ऑफ देम बी इक्वल टू एक्स और नॉट, ये प्रूव करेंगे, ठीक है जी। सो लेट मी टेल यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से अक्सर ही एक पार्ट बच्चों को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, मस्ट है, 100% आता है, ठीक है। सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट, मैं कोई ईजी सा, बहुत ही ईजी सा पार्ट डिस्कस कर लेती हूँ एंड देन विल गो टू सम डिफिकल्ट वन। ओके, let us talk about this. F of x is equal to minus 2x plus 8. So I'll be letting you people know about the steps. Minus 2x plus 8. Okay, let's have a look. F of x is equal to minus 2x plus 8. Now we all know that f of x usually किसके equal होता है? y के. So can I say my y is equal to minus 2x plus 8? ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़, if y is equal to f of x, from here can I say this x would be, अगर मैं x को इधर ही रखूँ तो f उधर जाके क्या हो जाएगा? f इनवर्स ऑफ y would be equal to x। ये याद रखना, ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे कि x किसके इक्वल है? f इनवर्स ऑफ y के, ठीक है जी। ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो हमारे पास आई है y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, वी विल बी फाइंडिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन, वी विल बी फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x। हाउ? आई थिंक यू पीपल आर फेमिलियर विद दिस। x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगी? आई विल बी कीपिंग माई x ओवर हियर। वैसे तो माई x इज़ नेगेटिव, सो आई शुड टेक x टू द अदर साइड एंड आई शुड ब्रिंग y टू दिस साइड। मतलब what should I do? I'll be bringing this x to, मुझे x को separate करना है ना, so I'm going to bring it over here. It would become plus 2x which is equals to 8 minus y. Now I want value of x, so I'll be keeping x here. It would become 8 minus y divided by 2. Please this 2, this 8 would not be cancelled by this 2, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे because y do not have a 2. Okay, now x is equal to 8 minus y divided by 2. इफ़ दिस इज़ इन एक्स, इस एक्स को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ एफ इनवर्स ऑफ वाई से? कर सकते हैं ना। इस एक्स की जगह आई एम गोइंग टू पुट हियर एफ इनवर्स ऑफ वाई विच इज़ नाउ इक्वल टू 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2. अच्छा, now my whole question, now you can see I got an inverse, but it is in the form of y, like f inverse of y is equal to 8 minus y divided by 2. I want the answer in x, so what am I going to do? I'll be replacing this y with x and that would be our f inverse. That's it, इतना सिंपल सा काम है, ठीक है। Let's do it. Now what I had, f inverse of y is equal to 8 minus y divided by 2. We will be replacing this y with x, so we will get f inverse of x is equal to, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम y पुट कर देंगे, 8 minus x divided by 2. This is your inverse, ठीक है जी। So as I got my inverse, which is f inverse of x is equal to 8 minus x divided by 2. Our second part was finding f inverse of minus 1. यानी जहाँ जहाँ x है we will be replacing that with minus 1. Let's do that. 8 minus minus 1 divided by 2. So we will get 8 plus 1 divided by 2, which is 9 divided by 2. That's it. This is your one answer. The other thing was proving that f inverse of f of x is equal to f of f inverse of x is equal to x. तो मैं इनमें से कोई एक आपको प्रूव करके बता देती हूँ। मैं ये वाली साइड ले लेती हूँ। हाउ एम आई सपोज टू प्रूव दिस कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस जो हमने किया था कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, व्हाट डज इट मीन? यू विल टेक f इनवर्स आउटसाइड और यहाँ पे आपका डिपेंडेंट फिलहाल f of x आपका इंडिपेंडेंट सॉरी आ रहा है, तो f of x फंक्शन, व्हाट वाज माय f of x फंक्शन व्हिच वाज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। एंड व्हाट वाज दैट? माइनस 2x प्लस 8, ठीक है जी। माइनस 2x प्लस 8 को हम
लेंगे, so it would be f inverse of f of x which is equal to f inverse of f of x की जगह I'll take 2 minus 2x plus 8. ठीक है जी, मुझे इसका आंसर x प्रूव करना है. ओके, नाउ व्हाट इज़ माय f इनवर्स ऑफ x? अभी अभी हमने फाइंड किया था. व्हाट वाज दैट? 8 minus x divided by 2. नाउ हियर इन दिस f इनवर्स ऑफ x, जहाँ पे मेरे पास x है वहाँ मैं रिप्लेस कर दूँगी उसको इस पूरी वैल्यू के साथ. यही कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है, सो आई एम गोइंग टू डू दैट. 8 minus 2x plus 8 whole divided by 2. Let us simplify this. 8, I'm going to open the bracket, 8 plus 2x minus 8 whole divided by 2. So now 8 and 8 cancelled out. 2x divided by 2, 2 cancelled out, and I got simply x. So that's how you can see that okay, f inverse of f of x is equal to x. एक side आपकी proof हो गई. Similarly, you will prove the other side too, which is f of f inverse of x equals to x. और वो कैसे प्रूव होगा? यू ऑल नो, f बाहर और f इनवर्स ऑफ x में हमारा जो हमने फाइंड किया था अभी इनवर्स, विच वॉज एट 8 minus x divided by 2, वो हम लेंगे. व्हाट वाज माय f of x? माय f of x was, बाकी आप इसको फर्दर खुद ही कर लीजिएगा. इट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल. ईजी है, बिल्कुल उसी तरह से होगा. जहाँ जहाँ पे f इनवर्स में x होगा वहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे. और सॉरी, जहाँ जहाँ पे f में x यूज़ हुआ होगा वहाँ पे आप f इनवर्स का जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा उठा के पुट कर देंगे, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट x. और वही हमें प्रूव करना था. ठीक है जी. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट, अब मैं चाह रही हूँ कोई थोड़ा सा, सी दिस इज़ द वैल्यू. अच्छा, मैं एक और पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेती हूँ. ओके, द फंक्शन इज f of x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब. The function f of x is equal to minus x plus 9 whole cube. We all know that f of x is also y. ये सब में होगा. We all know this है ना, कि f जब x पे अप्लाई होता है we always get y. Normally मतलब usually generally हम यही लेते हैं. So my y would be, let me write it a little better. y is equal to f of x. ठीक है जी. And why did I write this? To get value of this x. यानी अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे x की वैल्यू चाहिए. सो माई x वुड बी f, यहाँ आके क्या बन जाएगा? f इनवर्स ऑफ y. एंड वाई एम आई राइटिंग दिस? टू यूज़ इट लेटर ऑन. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह. नाउ आई गॉट y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब. दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेप. My second step would be I need to find the value of this x. अब you can see on left hand side there is only y, but on right hand side there is a cubical power. क्यूब है ना. तो रिजॉल्व करने के लिए, क्यूब को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? क्यूब रूट लेना पड़ता है, विच मीन्स 1/3. सो वी विल टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी 1/3 पावर. वी विल गेट y रेज टू द पावर 1/3 हियर. एक मिनट, ये डॉट क्यों है जी? हाँ जी, वी विल बी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. क्यूब रूट का मतलब होता है टेकिंग पावर 1/3. मैंने दोनों साइड्स पे लिया. सो आई गॉट y रेज टू द पावर 1/3 हियर, एंड हियर दिस 3 वुड बी resolve, and I'll simply get minus x plus 9, 3 into 1/3. So I got minus x plus 9 is equal to y raised to the power 1/3. Let me write it again here. So I got y raised to the power 1/3, which is minus x plus 9. ऐसा ही है. Now you all know that we needed value of x. हमें x positive चाहिए. So क्या करेंगे? I'm going to take this x to the other side. It would become x is equal to 9 minus y raised to the power 1/3. अब हमें पता है x किसके इक्वल था? x was equal to f inverse of y. So f inverse of y ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ करेगा. पहले में हमने जो आपका क्वेश्चन गिवन है इनवर्स के क्वेश्चन में, आप उसको y के इक्वल ले लोगे. ठीक है. देन बाय हुक और बाय क्रोक, लाइक बाय डूइंग योर फॉलोइंग योर स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स, यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ x. लाइक यू विल सेपरेट x फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़. बाकी जो भी बनता है उस x को आप नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर दोगे f इनवर्स ऑफ y से. सो इट वुड बिकम f इनवर्स ऑफ y नो मैटर व्हाट द वैल्यू हियर यू आर गेटिंग. अब आप देख सकते हो पूरा क्वेश्चन y में हो गया है. सो द फोर्थ स्टेप वुड बी यू विल बी रिप्लेसिंग योर y विद x. That's it. Now this is your inverse. F inverse of x is equal to 9 minus x raised to the power 1/3.
3. दिस इज़ माई इनवर्स. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी क्लियर, वो क्या था? फाइंडिंग एफ इनवर्स ऑफ -1. सो एफ इनवर्स ऑफ -1 का मतलब है जहाँ पे आपके पास एक्स वैल्यू है वहाँ पे आप -1 पुट कर लोगे, इसका आंसर ऐसा ही रहेगा 9 माइनस -1 रेज़ टू द पावर 1/3. इट वुड रिमेन द सेम. और उसके बाद यू विल बी अप्लाइंग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस. ठीक है, और उसके लिए आप प्रूव करोगे. सो लेट मी शो यू वंस द सोल्यूशन. सी, ये this was my answer to 9 minus x raised to the power 1/3. If you want, I think I should discuss one of the part at least. मैं एक डिस्कस कर लेती हूँ, लाइक ओके, f इनवर्स ऑफ x डिस्कस कर लेते हैं. सो ओके, माई व्हाट वाज माई इनवर्स? इट वाज 9 माइनस x रेज्ड टू द पावर 1/3. ठीक है, एंड आई हैव टू प्रूव इट इक्वल टू x. ठीक है, अच्छा, f ऑफ 9 माइनस x रेज्ड टू द पावर 1/3. व्हाट वाज माई f ऑफ x, जो कि मेरा क्वेश्चन था? व्हाट वाज दैट? इट वाज okay. Okay, so I gotta write, I wrote it again for you people. Okay, now this was my inverse, value of my inverse, I replace it here. This was my f of x. तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूँगी 9 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 1/3. लेट अस डू इट हियर. ठीक है जी, 9, दिस वुड बी माइनस, मतलब मैं x की जगह रिप्लेस करूँगी इस वैल्यू को, सो साइंस वुड बी चेंज्ड. इट वुड बी -9 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/3 एंड देन इट वुड बी +9, जो ये वाली वैल्यू है एज इट इज़, होल रेज टू द पावर 3. -9 plus 9 cancelled out. We got x raised to the power 1/3 whole raised to the power 3. 3 cancelled out. So we got only x which we needed, है ना? यही प्रूव करना था. इसी तरह आप इसको दूसरी तरह भी प्रूव करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस ही अप्लाई करके, विच वुड बी दिस एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और उसका आंसर भी एक्स ही आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन पूरा होगा. इवन इन लास्ट एग्जाम्स स्टूडेंट्स गॉट दिस क्वेश्चन ऑफ इनवर्स. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ योर असाइनमेंट. फॉलोइंग क्वेश्चन नीटली विद प्रॉपर स्टेप्स. आई गिव यू पीपल दीज क्वेश्चंस, मतलब लाइक दीज पार्ट्स, but go for the reduced syllabus, smart syllabus. Okay ji, I hope this is all cleared. Still, if there is any query, you people are welcome to ask. Okay, wish you all the very best. Allah Hafiz.